Yes, we can hear you. Yes. You can hear me well? Is it low or high? No, it's okay. It's okay. Okay. Yeah, that's fine. I don't hear you as well. How many people do we have listening today? 16 plus. Around 40 plus. 40. Yeah. And they're from, where are they from? From Pakistan, from Pakistan, Malaysia, Thailand, Canada. Yeah. Four different. Pakistan, Malaysia, Thailand. Canada, huh? Who's in Canada? Pastor Emmanuel. Pastor Emmanuel. Wow. Neighbor city. And is Pastor Yossi Marion there? I just text him. He's maybe joining us later. Okay. 2 Timothy chapter 1 verse, I want to read two verses here, verse 5 and verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 5 and 12. 5 and 12. Should I read it or will you read it? और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ तो खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। There's a particular word that is used there. It's called persuaded. यहाँ पर एक खास जो लफ्ज है इस्तेमाल किया गया है, यानी कि persuading यानी कि तरबियत करना। We see it also in Romans 4:21. हम इसको रोमियो का खत उसके चौथे बाब की 21वीं आयत में भी देखते हैं। Yeah, you don't have to read it, but you can write it down, these verses. आप इन हवाला जात को लिख सकते हैं। Romans 4:21. 21वीं आयत चौथे बाब की रोमियो, when it talks about Abraham being persuaded. ये इब्राहिम के बारे में है कि वो ईमान लाया। He was fully persuaded. और उसने खुदावंद पर ईमान जो है रखा अपना। Romans 8:38. 8वें बाब की 38 वर्स रोमियो। Romans 8:38. रोमियो 8वें बाब की 38वीं आयत। Paul says he was persuaded. वो कहता है कि वो ईमान लाया। Romans chapter 14 verses 5 and 14. रोमियो 14 बाब 5वीं और 14वीं आयत। Persuaded. ईमान लाया। Acts 13 verse 43. ईमान 13वां बाब उसकी वर्स 43 It talks about being persuaded. और ये सारे जो हवाला जात हैं ये ईमान लाने के ताल्लुक से हैं। Hello, I can't hear you, Pastor. Are you here? Yeah, वो stuck हो गए computer. Pastor Shubeli, can you hear me? Hello. What happened? Yes. Okay, are you back? Yes, we are. Actually, we are here. You lost, Pastor. Acts 13:43. इमाल 13वां बाब उसकी 43 आयत। Paul says
persuaded to continue in grace. वो ये कहता है कि मैंने अपना काम जो है, अपना ईमान जो है वो फजल के ऊपर जो है वो जारी रखा है। Acts 18:4, persuaded. इमाल 18वें बाब की 14वीं आयत। Acts 19:25 and 26, persuaded. इमाल 19वां बाब 25वीं से 26वीं आयत, ये भी सेम है। Acts 21:12 through 14, persuaded. इमाल 21 बाब की 11वीं से 14वीं आयत में भी आपको ईमान के बारे में है कि वो चलते रहे, मजबूत होते रहे उसमें। Galatians 5:8 through 10, persuaded. गलीतियों 5वें बाब की 8वीं से 10वीं आयत। So we can see that this word is used a number of times. हम ये देख सकते हैं कि ये लफ्ज जो है बार बार इन हवाला जात में आया है। That God wants us not to just agree with his mind, but be persuaded. खुदा ये चाहता है कि हम ना सिर्फ उसका जो हमारे लिए प्लान है उसके साथ वाकियत रखें, बल्कि उसमें आगे भी बढ़ते चले जाएं। Some people believe for a while, or they believe just temporarily. कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ चंद लम्हे के लिए ईमान लाते हैं, या फिर वो आर्जी तौर पर ईमान रखते हैं। And we can easily, any of us, have a double mind. और हम में से अक्सर लोग जो हैं उनका कई बार दोगला जो है, दो तरफा जहन हो जाता है उनका। James 1:8 and 4:8 talks about a double mind. यकूब पहले बाब की 8वीं आयत और चौथे बाब की 8वीं आयत दो तरफा ख्यालात या दो तरह के ज़हनों के बारे में बताता है। A person that goes back and forth. वो बंदा जो लहरों के साथ आगे पीछे जाता रहता है। I want Jesus, I don't want Jesus. मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु नहीं चाहिए। I want to go to Bible school, I don't want to go to Bible मैं school. बाइबल स्कूल जाना चाहता हूँ, नहीं, मैं तो बाइबल स्कूल नहीं जाना चाहता। I want to evangelize, I don't want to evangelize. मैं एवेंजलिज्म करना चाहता हूँ, नहीं। दूसरा ज़हन कहता है नहीं, मैं नहीं करना चाहता एवेंजलिज्म। And we see that we and many people today, we can easily be double-minded. हम देख सकते हैं कि आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं उनके दो ख्याल हो सकते हैं। हेलो, बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक फिर उनकी तरफ से जी आ रही है पास्टर जी, आ रही है। जी उनकी तरफ से सिग्नल का शायद इशू है। जी पास्टर साहब आपकी आवाज आ रही है। सर Can you hear me? Yes, sir. Yeah, we have a very bad connection for some reason. Yes. जी सर, आ रही है आवाज। So we can, even our internet can be double-minded. हमारा जो इंटरनेट है इसके भी दो ख्याल हो सकते हैं, कभी चले जाना कभी आगे अंदर। I'm not persuaded by technology. और मैं इस पर ज्यादा इत्तेकाद नहीं करता आजकल की टेक्नोलॉजी पे। And God sees us in his finished work. और खुदा जो है वो हमें ये चाहता है कि हम उसने जो फिनिश वर्क तमाम कर दिया उसमें बने रहें। He said Abraham was fully persuaded. वो ये कहता है कि इब्राहिम मुकम्मल तौर पर ईमान लाया। But we can see that at times he didn't believe. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि वो उसने खुदा पर ईमान नहीं रखा। He waited so many years for Isaac, and then he went to Hagar and had Ishmael. उसने कई सालों तक इसहाक का इंतजार किया, लेकिन जब वो ना हुआ तो वो हाजरा के पास गया और इस्माइल पैदा हुआ उससे। So being persuaded is not something that comes from a person's flesh. so ईमान लाना का मतलब ये नहीं है कि कई बार जो चीजें हैं हम जिस्मानी तौर पर करना शुरू कर दें अपने आप से। If the word means my mind is won over, I have to have the mind of Christ. अगर खुदा का कलाम हमारे ज़हनों में है, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है,
तो हमारे पास खुदा जैसी सोच और सलाहियत होगी। If I do not think with God in every area, then I will be persuaded differently. अगर मैं वैसा ना सोचूं जैसा खुदा सोचता है तो मेरा ईमान जो है या मैं किसी और डगर में चलना शुरू कर दूंगा। Paul says to the Galatians, this persuasion that you have is not from God. पलूस रसूल गलतियों को कहता है कि ये जो तलीम तुम्हारे पास है, ये जो ईमान तुम्हारे पास है, ये खुदावंद की तरफ से नहीं है। The Galatians received the message of grace from the Apostle Paul. गलतियों के लोगों ने पलूस रसूल से फजल का पैगाम जो है वो सुना। Then in Galatians 1:6, they were soon removed from that message. और बहुत जल्दी वो उस फजल की मुनादी से फिर गए। पहले गलतियों पहले बाब की 6वीं आयत में। And in Galatians 3:1, Paul says to the Galatians, you've been bewitched, or you had a satanic spell cast over you. और वो तीसरे बाब की पहली आयत में कहता है गलतियों में कि तुम्हारे ऊपर जादू टूना और बदरूहें जो हैं उस तरह का कुछ काबिज हो गया है। We have a word here that we use. We call it the word fickle. I don't know if you have that in your English, but a fickle person is back and forth, back and forth, back and forth. फिकल जो है यानी कि एक सरकंडा जिमें हवा ना हिलदा, कदी इधर जाना, कदी इधर जाना, कदी इधर जाना। But Paul and God himself wants us to be persuaded. पलूस और खुदा इन दोनों की ये ख्वाहिश है कि हम ईमान पर बने रहें और आगे बढ़ते रहें। If you have a chance, read Luke 9:57 through 62. Not now, but later. अगर आपके पास मौका हो तो पढ़िए लूका की इंजील 9वें बाब की 57 आयत। Jesus calls 3 different people. खुदा यीशु मसीह ने 3 मुख्तलिफ लोगों को बुलाया। One says, I'll follow you anywhere. एक ने कहा कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। Jesus said, I have no place to lay my head. लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे पास तो सर धरने की भी जगह नहीं है। Another one says, let me go and bury my father. और दूसरे ने कहा कि मुझे जाने दे ताकि मैं अपने बाप को दफन कर सकूं। His father actually wasn't dead. What he was saying in the Greek language is, let me await the death of my father. असल में उसका बाप नहीं मरा था, लेकिन वो ये कह रहा था कि मुझे अपने बाप की जो मौत है उसकी आगाही जो है हो रही है। Jesus said, let the dead bury the dead. यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को उनके मुर्दे दफन करने दें। Let the spiritually dead bury the physically dead. जो रूहानी तौर पर जिंदा हैं उनको जो जिस्मानी तौर पर मुर्दा हैं दफन करने दो। The third man said, I want to say goodbye to my family. जो तीसरा बंदा था उसने कहा कि मैं अपने खानदान को छोड़ना चाहता हूँ। Jesus said to him, if you put your hand to the plow, don't look back. खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तुम अपना हाथ जो है हल पर रखते हो तो पीछे देखते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। So what it means for my life to be persuaded. तो इसका क्या मतलब है कि मेरी जिंदगी में मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ? In Paul's last letter to Timothy, he uses this word in 1:5 and 1:12 of 2 Timothy 1. यही लफ्ज जो है पहले बाब की 5वीं आयत में फिर 11वीं आयत में भी वो इस्तेमाल करता है। Timothy, you have a call and a purpose from God. तिमोथियस तुम्हारे पास खुदा की बुलाहट है और कॉल है तुम्हारे पास। Timothy, you are a preacher, you're a teacher of the gospel. तुम्हारे पास तुम खुशखबरी के उस्ताद हो और उसके मुअल्लम हो। And you are a man of God with a purpose from God. तुम खुदा के बंदे हो और उसकी कामिल मर्जी पर चलने वाले हो। There will be much opposition. हो सकता है उनकी बहुत ज्यादा मुखालफत हो रही हो। I mean, you think about some of the things he said to him in 2 Timothy. आप देख सकते हैं कि जो दूसरे तिमोथियस में उसने बातें उनसे कही हैं। In you can be fear. और तुम उससे खौफजदा भी हो सकते हो। You'll have the afflictions of the gospel. लेकिन तुम्हारे पास खुशखबरी का मौका है। Death comes to all men. मौत हर किसी को आती है। Don't have a fear of death. मौत का डर नहीं होना चाहिए तुम्हें।
I'm giving God's committed something great to you. खुदा ने तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी लगा रखी है. You'll have men like Phygellus and Hermogenes who will go against you. तुम्हारे खिलाफ जो दो लोगों के नाम लिए हैं वो भी हो सकते हैं. You'll have one of your great disciples and friends, Onesiphorus. He will pass into eternity. तुम्हारा जो एक दोस्त है वो अब्दियत में चले गया है जिसका नाम अभी इन्होंने लिया है. He says everybody in Asia will turn away from you. एशिया में से हर कोई जो है वो किस कदर तुमसे जल्दी फिर गया है. That's 2 Timothy 1:15. ये दूसरा तिमुथियुस पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है. And Paul is writing this from a prison cell. और पौलुस रसूल ये खत जो है उसको कैद की हालत में लिख रहा है. But Paul is persuaded about God's purpose in his life. लेकिन पौलुस रसूल जो था वो खुदा की मर्जी पर और उसके वादे पर खड़ा था. And it's only a persuaded person who can persuade other people. और एक वो बंदा जिसके पास जो खुद ईमानदार है वही दूसरे लोगों को ईमान की गवाही दे सकता है. Many people never want to follow God because they watch Christians and they see what they do and they don't see anything there. बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं और वो कलाम को नहीं सुनना चाहते. वो करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं. Christians and pastors and churches can be a bad example. पास्टर चर्च और दूसरे लोग जो हैं वो हमारे लिए एक बुरी मिसाल हो सकते हैं. They're involved with politics. वो सियासत में मुलव्वस हो सकते हैं. Church is not a place where you चर्च एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप पॉलिटिशियन कर सकते हैं. people go to church and there's nobody preaching the word. लोग चर्चों के अंदर होते हैं और लेकिन वहां पर तो कलाम की मुनादी की ही नहीं जाती. I went to a church in Nigeria once. पास्टर एक नाइजीरियन चर्च में गए एक बार. It was 3 hours long. वो 3 घंटे की उनकी दुआ थी. 2 hours was music. 2 घंटे जो थे वो वर्शिप के थे, म्यूजिक के थे. 30 minutes was prayer. 30 मिनट जो थे वो दुआ के थे. 15 minutes of announcements. 15 मिनट जो थे वो लाना जैसे लान जरूरी लान. And offerings. और हदिये के थे. About 10 minutes for the Bible. और 10 मिनट जो थे वो कलाम के लिए थे. I was persuaded that that church was not from God. मैं कायल हो गया था, मेरा पक्का इरादा बन गया था कि चर्च खुदा वालों नहीं. Were they born again? Yes. क्या वो दोबारा नए सिरे से पैदा हुए थे? हाँ, बिल्कुल ऐसे हैं. But they weren't persuaded. लेकिन वो खुदावंद के कलाम की मर्जी को नहीं जानते थे. If you like music more than you like the Bible, you'll never be persuaded. अगर आप खुदा के कलाम से म्यूजिक को ज्यादा पसंद करते हैं तो आप कभी भी ईमान पर खड़े नहीं हैं. And I like music in a balance, you know. मुझे भी म्यूजिक पसंद है लेकिन हर चीज का एक वक्त बैलेंस होता है ना, बराबर बराबर. So Paul is telling Timothy to be persuaded. तो पौलुस रसूल तिमुथियुस को कायल कर रहा है. You can see that Abraham, as the father of our faith, was persuaded. आप देख सकते हैं कि इब्राहिम जो हमारे ईमान का बाप है वो कामिल रहा. He left a very, very economically very well civilization in a place called Ur. उसने अपना जो इलाका था, बड़ी जायदाद जो थी वो पीछे छोड़ दी. And he went and he didn't even know where he was going. और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर जा रहा है. And he wasn't mindful of where he came from. उसे ये भी नहीं पता था कि वो किधर जा रहा है और कहाँ से वो आ रहा है. Why? He was persuaded by God. क्यों? क्योंकि वो खुदावंद की मर्जी को जानता था. Jeremiah had all the priests and the prophets come against him. यिर्मयाह के खिलाफ हर तरह के काहिन और जो दूसरे लोग थे उसके खिलाफ हो गए थे. In Jeremiah chapter 1 verses 9 through 15,
यिर्मयाह पहले बाब की 9वीं से 15वीं आयत में Everybody was his enemy, even his family. उसका अपना खानदान उसका दुश्मन बन गया था, बाकी सारे लोग भी। But he was what? लेकिन उसके ज़हन में एक बात थी, क्या थी वो? I'm on my way to Morocco soon. वो ये कह रहा था कि मैं अपने मुल्क में जरूर वापस जाऊंगा On November 7th. नवंबर 7 को November 7th. नवंबर 7 को There's one man there who's been with us for 10 years. वहां पर एक शख्स था जो 10 साल के लिए वहां पर रहा। He was imprisoned. वो जेल में था A second time, he was imprisoned with his wife. और दूसरी बार जब वो जेल गया तो वो उसकी बीवी के साथ था A third time, they put him in prison with his children also. और तीसरी बार जब उसे जेल हुई तो वो अपने बच्चों समेत जेल में था, He's still following God. लेकिन वो अभी भी यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। What would you say about that man? तो आप क्या कहेंगे इस शख्स के बारे में? You know, sometimes we talk about people in Islamic countries or in China or places and all that will happen after they choose Christ. दूसरे बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है, चाइना में और दूसरे मुल्कों में जब मसीह को लोग कबूल करते हैं तो उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। You know what the Jews do when somebody gets converted to Christ? क्या आपको पता है यहूदी क्या करते हैं जब कोई यहूदी मसीह की तरफ आ जाता है? They give that person a funeral तो वो उस बंदे का जनाजा पढ़ा देते हैं as if they don't exist again. इसका मतलब है कि वो बंदा है ही नहीं, मर गया है उन्हें से। It was very serious. ये बड़ी सीरियस बात है। Maybe your family will come against you. हो सकता है आपका अपना खानदान आपके मुखालिफ खड़ा हो जाए, Are you persuaded? लेकिन क्या आप ईमान पर खड़े हैं? Maybe your husband will not want to follow God. Are you persuaded as a woman of God? हो सकता है आपका खामन जो है वो खुदा को नहीं मानता, तो खुदा की बंदी होने के नाते से क्या आप अभी भी दिलेर हैं? Maybe your wife or children will not want to follow God. हो सकता है आपके बच्चे और बीवी खुदा को फॉलो नहीं करना चाहते। Are you persuaded? तो क्या अब भी कायल हैं आप? Not just have some single thoughts with God, but have our minds won over. कभी सिर्फ एक ही ख्याल जो है खुदावन की तरफ से है, छोटा सा ईमान नहीं है, बल्कि खुदावन जैसा जहन रखिए जैसा खुदा आपके बारे में सोचता है। Now let me give you some things that you should be persuaded about. मैं आपको कुछ पॉइंट बताने लगा हूं कि जिन चीजों में आपको कायल होना है, ईमान पे खड़े रहना है। Number one, am I persuaded about the person of Jesus Christ, his character? क्या नंबर 1 पहली बात यह है कि क्या मैं कायल हूं कि खुदा जो है वो यीशु मसीह के जैसा, खुदा जो है वो यीशु मसीह है। He's not just a good man or a prophet, he's God himself. वो एक कोई नबी नहीं है, आम नबी नहीं है, वो मुकम्मल खुदा है। Are you persuaded by that? क्या आप इस बात पर कायल हैं, आपका ईमान है? यस। It will put you at odds with people. तो ये आपको लोगों की सामने ले आएगी ये बात, लोग सवाल जवाब करेंगे। Number two, are you persuaded about the work of the cross, the finished work? दूसरा पॉइंट, क्या आप कायल हैं इस बात के, ईमान रखते हैं कि जो यीशु मसीह ने सलीब पर आपके लिए काम कर दिया है? That you are not saved by your own works, आप अपने आप से रास्तबाज नहीं ठहर सकते, ना ही बच सकते हैं, but it's the work of the cross. सिर्फ और सिर्फ सूली के उस काम की वजह से। Number three, are you persuaded by the church about the church? तीसरी बात, क्या आप चर्च के कायल हैं? That fellowship in the church is vitally important. कि चर्च के अंदर कलीसिया के साथ मिलकर दुआ करना बहुत जरूरी है। Are you persuaded? क्या आप इस बात के कायल हैं? Yes. Are you persuaded by the gospel, giving people the gospel and evangelism? क्या आप इस बात के कायल हैं, एग्री हैं इस बात से कि लोगों को अंजील देनी है, खुशखबरी सुनानी है? Yes. Are you persuaded that you have an eternal purpose with God? क्या आप इस बात के कायल हैं कि आपके पास हमेशा के जो अब्दी प्लान है वो है? Are you persuaded that God has called you?
क्या आप इस बात पर कायल हैं कि खुदा ने आपको बुलाया है? Are you persuaded when you have success? And are you persuaded when you have failure? क्या आप इस बात के कायल हैं कि जब आप बड़े कामयाब हो, और क्या आप इस बात के भी कायल हैं कि जब आपके पास कुछ ना हो, कोई बात नहीं है? See, some people are persuaded some of the time. कई लोग जो हैं वो सिर्फ एक खास वक्त होता है जब वो कायल होते हैं, यानी ईमान में खड़े रहते हैं, बस एक खास One, वक्त के लिए। one great example of being persuaded. एक बड़ी मिसाल जो है वो कायल होने के बारे में, Read sometime Numbers 13 and Joshua 14. नंबर 13 एंड यशवा 14, गिनती 13वां बाप और यशवा 14वां बाप पढ़िएगा। As a reference. ये रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। When गिनती Caleb 13, when Caleb was 45 years old, he wanted a mountain. जब कालेब 45 साल का था, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया। And when he was 85 years old in Joshua 14, he got that mountain. और जब वो 95 साल का था, वो तब भी उन पहाड़ों पर चढ़ जाता था। 85 years old. 85 साल का था जब वो, He said, "Give me this mountain." वो कहता है खुदावंद पहाड़ मैनू दे दे। And there were enemies there. और दुश्मन वहां पर थे, But Caleb was persuaded. लेकिन कालेब जो था वो इस बात का कायल था। You can see people through the Bible that were persuaded. आप बाइबल में से देख सकते हैं वो लोग जो किस तरह से कायल रहे हैं खुदा के साथ। It also shows us double-minded people. और बाइबल में हमें दो तरफा ख्यालों वाले लोग भी मिलते हैं, जिन You can see that in the book of Acts, Peter was persuaded about his calling. आप देख सकते हैं इमाल की किताब में पतरस को। In Matthew 27, 26, and 27, he wasn't persuaded, he was denying the Lord. मत्ती 26 और 27 बाब में वो खुदा का कायल नहीं था, ईमान नहीं ला रहा था, वो इनकार कर देता है यीशु का। But when he was filled with God's word and God's spirit, he was persuaded. लेकिन जो ही वो खुदा के कलाम से और उसकी रूह से भर गया, वो कायल हो गया और वो ईमान ले आया। So as believers in Pakistan or Malaysia or wherever you are, और एक ईमानदार होने के नाते मलेशिया और कनाडा में जहां कहीं भी आप हैं, watch out for advanced civilizations, technology, and the good life. Watch out. आपके पास जो अच्छी सहूलतों से भरी जिंदगी है या और दूसरी चीजें हैं, उनको देखें कि वो कैसी हैं। It can spiritually infect your mind with spiritual illness. ये आपको रूहानी तौर पर, रूहानी तरीके से रूहानी बीमारी में मुब्तला कर देंगी। A lot of Western Christianity is very strange. बहुत सारे जो मगरबी मुमालिक की कलीसियां हैं वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी हैं अब। They're afraid to speak out about homosexuality, about drinking, about drugs. They won't speak against those things. बहुत सारी कलीसियां जो है मगरिब में वो हम जिनसी और दूसरी बातों के बारे में, नशावरत चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं करती हैं। They're so concerned they're going to offend people. वो बड़े परेशान हो जाते हैं, लोग की रोज जाएंगे। If I offend you, I don't really care. अगर मैं आपको नाराज कर देता हूँ कलाम दी गल कह के, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। If I say something today and you get angry, it doesn't bother me. I don't care. अगर मैं आपसे कुछ कह देता हूँ तो तुसी नाराज हो जांदे ने, मैनू तो कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं कलाम दी गल करके छड्डनी। Galatians 4:16, Paul says, "Am I your enemy because I tell you the truth?" गलतियों चौथे बाब की 6वीं आयत में पौलुस कहता है, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैंने तुम्हें सच्चाई की बात बताई है। Was Daniel persuaded? क्या दानियल कायल था, वो ईमान लाया था? Daniel was in an advanced civilization in Babylon. बाबल के अंदर जो था दानियल, वो एक बड़ी जदीद किस्म की जो कल्चर था उसमें था। He wouldn't change his food. लेकिन उसने अपना खाना पीना नहीं बदला। They wanted him to change his name. वो चाहते थे कि उसका नाम बदल दिया जाए। They wanted him to change his food. वो चाहते थे कि उसका खाना बदल दिया जाए दानियल का। Because they wanted him to change his king.
क्योंकि वो चाहते थे कि उसका दानियल का बादशाह बदल जाए। And the three Hebrew boys said, "Put us in the furnace. We will not bow to your God." और वो जो 3 अब्रानी लड़के थे वो कहते हैं कि हमें आग की भट्टी में फेंक दो, हम तुम्हारे खुदा को सजदा नहीं करेंगे। They were trying to make changes in Daniel's life. वो दानियल की जिंदगी में रद्दोबदल करना चाहते थे, But they were persuaded differently. लेकिन उन्हें एक और चीज का सामना करना पड़ा। It's like Esther chapter 3, verse 1. ये एस्तर तीसरे बाब की पहली आयत जैसा वाकया हमें मिलता है यहाँ पर। It said that Mordecai did not bow to Haman. He was the only one. He would not bow. कि मलकाई जो है ये उसके आगे नहीं झुकेंगे और सिर्फ वही एक है जो रह गया। Everybody was bowing to the king's ambassador, Haman, who was evil. हिमान जो था वो बादशाह के करिंदा था, हर कोई उसके आगे सजदा करता था, लेकिन दूसरे लोग नहीं करते थे। But Mordecai would not bow. लेकिन मर्दकी जो है वो नहीं झुकेगा। What happened to Jonah? योना की तरफ, योना को क्या हुआ? He was double-minded. वो भी दो तरफा ख्याल था उसका, योना का। God called him and then he went the other way. खुदा ने उसे इस तरफ बुलाया और वो दूसरी तरफ चले गया, He had double mind. क्योंकि उसका ज़हन जो था वो डबल माइंड हो गया हुआ था। How about the woman at the well in John 4? She was mentally won over. ये औरत, आप इसको क्या समझते हैं? चौथे बाब, यूहन्ना चौथे बाब में जो कुएं पर बैठी हुई थी। How about the man in Mark chapter 5 who went to 10 cities? आप उस बंदे के बारे में क्या कहते हैं? मरकस 5वें बाब में जो 10 शहरों में गया। He was what? वो कौन था? Mentally won over. वो ऑलमोस्ट उसका ज़हन जो था हिला हुआ था। So let's be a people who are persuaded. तो आए ऐसे लोग बन जाएं जो ईमान पर खड़े रहते हैं और खुदावंद की कायलियत में कायम हैं। This is very important यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, because many things will come our way बहुत सारी चीजें हमारे रास्तों में आएंगी to try to persuade us. वो हमें हटाने की कोशिश करेंगी, कायल करने की कोशिश करेंगी अपनी तरफ। Usually the biggest enemy is good things, but they're not from God. बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि जो अच्छी चीजें हैं वही हमारी दुश्मन बन जाती हैं। Somebody gives you a good job, but it takes you away from church. हो सकता है कोई आपको बड़ी अच्छी जॉब ऑफर कर दे, लेकिन ये अच्छी जॉब आपको चर्च से दूर कर देगी। See, in Luke chapter 4, the devil tried to persuade Jesus. लूका की इंजील चौथे बाब में आप देखते हैं कि एक अंकल He ने, lied. एक मिनट, He lied अंकल to जी him. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਓ। He lied to the devil. The devil lied to Jesus. वो खुदा से झूठ बोल रहा था और यीशु मसीह से झूठ बोल रहा था। He showed him all the kingdoms of the world. उसने एक ही मिनट में उसे दुनिया की सारी बादशाह दिखा दी। He tried to persuade him. और उसने यीशु को कायल करने की कोशिश की। But Jesus resisted and did not even bring it into his mind. और यीशु मसीह ने उसको रोका, उसका जवाब दिया, यहाँ तक कि अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। And the devil will try to persuade churches and Christians to change. और इसी तरह इब्लीस जो है चर्चों को, कलीसियों को, लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा है, कायल करने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ। But we have to have our minds filled with God's thoughts. लेकिन हमने अपने दिमाग को खुदा के ख्याल से भर के रखना है। Isaiah 55, 8 through 10, his thoughts produce his ways. यसाया 55 चैप्टर 1 वर्स में 1 लिखा है कि उस जैसा ही हमने माइंड रखना है। 55, 8 through 10. 55 पहली आयत से 8वीं आयत तक। Yeah. So let's learn something today, all of us, हमने मिलकर ये सीखा है from the scriptures खुदा के कलाम में से, to be persuaded.
कि कायल रहना है, ईमान पर खड़े रहना है। Maybe you're young today and you are persuaded. Will you be persuaded 20 years from now, 30 years from now? हो सकता है आप अभी जवान हो, 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने कबूल किया हो खुदा को। If you keep receiving God's mind, you will be. और आप अभी तक खुदावन की बातों को रिसीव कर रहे हैं। But if your mind is filled with garbage, you will smell like something that's human and not from God. लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी भूसा भरा है, कूड़ा करकट भरा है, तो आप से स्मेल आएगी इंसान होने की स्मेल, जो कि खुदादाद सलाहियत नहीं है। So you're surrounded by the enemy. तो आप इब्लीस से घिरे हुए हैं, Be persuaded. तो ईमान पर खड़े रहिए, कायल रहिए। Like Daniel in Babylon. जैसे कि दानियल बाबल में खड़ा रहा, Like Paul in Rome. जैसे पलूस रोम में खड़ा रहा। Let's be persuaded. आए कायल रहें, ईमान पर खड़े रहें। Amen. आमीन। Okay, we have time for questions or whatever. यस, कोई बात रोमिस? यस पास्टर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, उस पर जरा गौर करनी है। ये जो जितने भी हम लेटर्स हमें मिलते हैं, जितने भी खत हैं, रोमियो से लेके इब्रानियों तक 14 खत है, इसको लिखने वाला बंदा कौन था सर? इसके बारे में जरा जरूर डिटेल में बताइएगा। आज नहीं तो बाद में कभी बता दें, लेकिन इस पॉइंट को जरा जरूर याद रखना। जो मेरी मतलब नॉलेज के मुताबिक है या जो मैंने सीखा पढ़ा है उसके मुताबिक ये 4 बंदे हैं। लेकिन ये एक बंदे ने मुझसे बात की है, किसी भाई ने, तो उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है और वो कह रहे हैं जी ये सारे खतों को जो लिखने वाला है ना, वो एक ही बंदा है। वो बाय रेफरेंस मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, पता नहीं आज या कल का वो मुझे भेजें, तो काइंडली इसके बारे में जरूर थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि मैंने जो सर्च किया है उसके बारे में इसके बारे में तो ओके, 4 लोग हैं ये जिन्होंने इसको लिखा है। ये आपकी सर्च है कि 4 लोग हैं। इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। जी जी जरूर सर, जरूर। थैंक यू। जी जी, रोमिस आप कुछ कहना चाहते थे? Thank you so much for all participants and Pastor Shibele and